सो वी आर लाइव। हेलो ट्रैव क्लैन मेंबर्स, स्वागत है आपका हमारे एक और मॉलडीज ट्रेनिंग वर्कशॉप में। जैसा कि हमने लास्ट सेशन में देखा था, इनफैक्ट लर्न करा था ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी द्रिफ्ट थेलू वैली का रिट्रीट के बारे में। सिमिलरली आज हम आपके लिए एक न्यू प्रॉपर्टी का लर्निंग सेशन लेकर हाजिर हुए हैं। एंड ये सेशंस कंडक्ट कराने के पीछे बेसिकली एक ही हमारा रीजन होता है, दैट इज जो हमारी ट्रैव क्लैन फैमिली के मेंबर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके, ज्यादा से ज्यादा लर्निंग मिल सके, सो दैट वो ज्यादा से ज्यादा बुकिंग्स स्पेशली मॉलडीव्स की क्लोज कर सके। एंड आज की जो प्रॉपर्टी है वो काफी एक्साइटिंग हो जाती है, इसलिए नॉट जस्ट बिकॉज कि वो एक लग्जूरियस 5 स्टार प्रॉपर्टी है, बट इसलिए कॉज वी एज इंडियंस हमें प्राइवेसी ना बहुत पसंद है। लाइक आई एम श्योर कि आपके कस्टमर्स भी चाहते होंगे कि दे स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद देयर फैमिली, देयर लव्ड वंस इन अ प्राइवेट सेक्लूडेड प्लेस। एंड दैट्स वन मोर रीजन कि व्हाई Maldives हैज बीन सो पॉपुलर इन दिस पोस्ट कोविड टाइम्स। बट ये तो बात हुई ओवरऑल Maldives के बारे में। आज की जो प्रॉपर्टी है कोको बोदू ही थी, वो एक स्टेप आगे जाती है जब बात होती है प्रिवेसी की। दिस 5 स्टार प्रॉपर्टी अपार्ट फ्रॉम बीइंग लग्जूरियस आल्सो ऑफर्स प्राइवेट पूल इन ईच रूम। हाउ कूल इज दैट, राइट? इसके अलावा ड्यूरिंग द स्टे आपके कस्टमर को एक फ्री फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट भी मिलता है, जो पर्सनली मुझे काफी यूनिक और रिच एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाला लगता है। बट व्हाट एग्जैक्टली इज देयर जो आपको कोको उदू हिथी के बारे में जानना चाहिए, डालेंगे इसी पर नजर, जानेंगे व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड नो अबाउट दिस प्रॉपर्टी। एंड आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप वो लाइव चैट में जरूर पोस्ट करें एंड वील ट्राई टू आंसर देम इन आवर Q&A सेशन। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। एंड आज के गेस्ट ऑफ द इवनिंग जो है उनको किसी इंट्रोडक्शन की तो वैसे नीड नहीं है। लेट अस वेलकम द ट्रैवल इंडस्ट्री एक्सपर्ट एंड मेरे बहुत अच्छे मित्र मिस्टर सैफी शाहिद। हेलो सैफी, वेलकम बैक, कैसे हैं आप? हेलो रक्षित, मैं बहुत अच्छा हूँ। आपके साथ वापस से एक सेशन करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड हेलो ऑल ट्रैवल पार्टनर्स, वेर एवर यू आर सीइंग दिस सेशन लाइव, वी वेलकम यू बैक ऑन ट्रैवल प्लान दिस लर्निंग सेशन। और लाइक लास्ट वीक हमने जो मालदीव्स के रिजॉर्ट्स के सेशन करने स्टार्ट किए थे, देन वी रियलाइज कि दिस इज वन थिंग राइट नाउ जो हमारे ट्रैवल पार्टनर्स को काफ़ी ज़्यादा चाहिए होगा, a deep insight and little bit more information about property, that what are the information that they can pass on to their customer काफी श्योरली, जिसके बारे जिससे उनकी सेल्स इंक्रीज हो सके, प्लस व्हाट आर द इंफॉर्मेशन दैट अ रिजॉर्ट हैज, सो दैट उनको उस रिजॉर्ट के बारे में करेक्ट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन रहे। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स जिसको लेकर आज हम एक वापस से आपके पास आए हैं, स्पेशली कोको बूदू, राइट? While selecting properties, मैं और अक्षित initially were discussing कि what kind of property we should select next for our viewers, जिसके बारे में हम काफी डिटेल में बता पाए। So there were a lot of property which we discussed. Why we choose Coco for primarily for two reasons. One, uh, because right now there are a lot of customers who are looking, especially honeymooners, right? Two kind of option which is very famous across, अगर आपके कस्टमर्स के कॉल आते होंगे तो वो दो चीजें आपसे जरूर पूछेंगे। पहला, प्राइवेट पूल; second, floating breakfast, right? These are the few common things which most of the customers are, because most of the customer are honeymooner, they are going first time outside India, they are traveling after almost like post lockdown, so they also want to experience overall a luxury experience with certain different kind of thing, right? तो इसलिए हमने ये एक प्रॉपर्टी चुनी जिसमें काफी अच्छा मिक्स मिला हमें हनीमून्स का, हनीमूनर्स के जो इंक्लूजन होते हैं, फिर उसके बाद कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है बेसिक प्लस लग्जरी की, वो थर्ड, स्पेसिफिकली इस प्रॉपर्टी की रूम कैटेगरीज वाज अमेजिंग, सो दैट्स व्हाई वी हैव चूजन दिस प्रॉपर्टी, ताकि इसके बारे में हम आज आप डिटेल से बता पाए विथ वट एवर लिटिल इन्फॉर्मेशन वी हैव अबाउट दिस प्रॉपर्टी, राइट? ऑब्वियसली वी ऑलवेज वेलकम कि आप हमसे काफी सारे सवाल पूछें, क्वेश्चन पूछें, जो भी हैं। इवन दो माइट बी देयर आर सम क्वेश्चन जिसके आंसर मुझे और अक्षत को नहीं पता होंगे, बट वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू वो आंसर ढूंढ के, सो डोंट वरी अबाउट इट। यू कैन आस्क एज मेनी एज क्वेश्चन एज पॉसिबल and we will try to answer all of them. सुरक्षित, आप जब भी कोको या मालदीव के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? वेल, जैसा कि मैंने पिछले सेशन में भी बताया था कि मॉलडीव्स अगर हम लेमैन टर्म्स में बात करते हैं तो एक नॉर्मल कस्टमर के जो माइंडसेट आता है उसमें यही होता है मॉलडीव्स है कि रिजॉर्ट होगा, पानी के बीच में रिजॉर्ट बना होगा, प्राइवेट एरिया होगा, वहां पर हम एक्टिविटीज कर सकते हैं।
बट डेफिनेटली जैसे कि हमने इन सेशंस में भी देखा कि जब हम उसमें डीप डाइव करते हैं एंड देखते हैं कि इतना कुछ है मॉलडीव्स में जो कि नेचुरली एक कस्टमर को नहीं पता होता है, तो डेफिनेटली ये सेशंस जो एक हमारे एजेंट्स को एक एज दे रहे होते हैं कि मॉलडीव्स में ऐसे-ऐसे डिफरेंट रिज़ॉर्ट्स होते हैं। उन डिफरेंट रिज़ॉर्ट्स में इतनी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अब आज कोको बुदू के बारे में बात करें, तो आई रिमेंबर कि रिसेंटली तापसी पन्नू जो एक्ट्रेस है, उन्होंने भी एक इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डाली थी फ्री फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट के साथ। तो वो काफ़ी लाइक ट्रेंडिंग हुआ था एंड डेफिनिटली कस्टमर्स जब ऐसे एक्ट्रेसेस, एक्टर्स को बट आई देखते हैं। थिंक रक्षित दैट कैन बी अ ट्रिविया क्वेश्चन कि तापसी पन्नू ने जो फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट डाला था वो कौन सी प्रॉपर्टी का था? दैट वाज नॉट कोको ऑब्वियसली, यस, बट दैट इज अ यस, गुड ट्रिविया क्वेश्चन। यस डेफिनिटली एंड कस्टमर्स जब ऐसे देखते हैं कि बॉलीवुड एंड डिफरेंट एक्टर्स जब ये लैविश लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं, तो डेफिनिटली इंडीड लाइक मैं अगर अपना एज़ अ कस्टमर एक्सपीरियंस बात करूँ, तो मुझे भी उन चीज़ों का एक्सपीरियंस करने का मन करता है। तो कोको इस चीज़ में काफ़ी मुझे अच्छा लगा पर्सनली, लाइक जैसा आपने बताया कि जब हम डिस्कशन कर रहे थे कि हनीमूनर्स करंटली अभी ट्रेंडिंग टॉपिक कह सकते हैं एंड प्लस जो प्राइवेट लोगों को प्राइवेसी पसंद होती है, तो उसका एक जुडिशियस मिक्स हमें कोको में देखने को मिल जाता है। तो इंडीड वो काफ़ी एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है। करेक्ट रक्षित, लाइक यू वेरी वेल सेड कि इंडियन कस्टमर्स को बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें जो चाहिए होती हैं, राइट? एंड प्राइवेसी हनीमून में, plus they want experience of a luxury in very limited budget. So those are things which are available in Coco. So obviously Rakshat ने वो trivia question पूछा था. If anybody want to answer that question, you can answer that कि तापसी पन्नू कहाँ गई थी जहाँ उन्होंने फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट करा था. There are a lot of Bollywood celebrity which have been in Maldives and it is keep on going. There are a lot of celebrity which are right now in Maldives. There are a lot of celebrities which keep going and coming back from Maldives, right? And I think one more interesting quiz can be Rakshit. कोको बुदू में कौन-कौन से सेलिब्रिटी गए हुए हैं बॉलीवुड के, टॉलीवुड के या फिर टेलीविजन के? कोई तो होगा which have been in कोको बुदू, right? Which can be a good trivia question also. So let's before we go into this trivia, let's start. तब तक रक्षित इस ट्रिविया के आंसर ढूंढते हैं इंस्टाग्राम पे कि कोको बुदू पे कौन-कौन से सेलिब्रिटी गए हुए हैं. तब तक लेट्स गेट इनटू दिस इंटरेस्टिंग आज के हमारे जो स्लाइड है कोको बुदू के बारे में. लेट्स गो इनटू दिस. आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल. यस सैफी, प्लीज़ कंटिन्यू। करेक्ट. सो लाइक आज हम बात करेंगे कोको बुदू हिती की प्रॉपर्टी के बारे में. व्हाट इज कोको बुदू हिती की प्रॉपर्टी क्या है? तो बेसिकली कोको बुदू हिती एक मॉलदीव में एक स्मॉल आइलैंड पे एक प्रॉपर्टी है व्हिच इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी ऑफ कोको. So they have two different kind of property. One is Coco Budu and one more property of Coco, right? So both are managed by Coco. So this property is known as Coco Budu Hiti. So Coco has a two different property in Maldives. If anybody want to know in general, one is Coco Budu and second is another property, right? Uh, so what do we know in terms of brief about Coco Budu property? So this is something which I have written. Coco Budu is based on a small island with a very uniquely their rooms. Everything is designed in such a way which provide a complete privacy to their customers. Plus, it is also designed in a way which give you experience of a luxury, right? So there are two different things which Coco Budu has created or has tried to do in their all the rooms, right? They have tried to create first part which is privacy, second part which is luxury. So they have combined both of them in a pricing which gives you very much value of money, right? Coco Budu as a property has approximately 100 rooms available in this property, right? They have approximately 100 rooms available, which your customer can see. They have more than 5 restaurants also available in their property, which you will be able to see as we go through. Plus, this restaurant is ideally for very good for honeymoon couple. Very good. They have lot of room also for family kind of themes, right? Which I will show you once we go ahead and later on, right? And because Coco Budu is based very nearby, so the traveling can be done by speedboat also, like located near Male Airport, accessible within 40 minutes by speedboat.
राइट। सो कोकोबुदू जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कि सी प्लेन की प्रॉपर्टी थी, कोकोबुदू इज नॉट, कोकोबुदू इज कैन बी ट्रेवल बाय स्पीड बोट। बहुत सारे हमारे ट्रैवल एजेंट हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि स्पीड बोट तो जा रही है इस प्रॉपर्टी में, बट क्या हमारा कस्टमर सी प्लेन का ऑप्शन भी ले सकता है? राइट। तो टिपिकली एनी प्रॉपर्टी जहाँ पे स्पीड बोट जा रही होती है वहां पे सी प्लेन का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। राइट। ये एकदम करेक्ट चीज होती है जो आपको अपने कस्टमर को बता देनी चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज मैनेज्ड स्पीड बोट। तो वहां पे आपको स्पीड बोट के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल कोको बुदु हिथी को ले रहा है तो उसकी स्पीड बोट का ही ऑप्शन मिलेगा। राइट। एंड दिस इज वॉट एनीथिंग दैट यू वांट टू नो अबाउट कोको बुदु, यहाँ पे आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। So before we go ahead about Coco Budu, let's first see uh, location wise how Coco Budu is based. Coco Budu की एक मैप जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था और दैट प्रॉपर्टी, आज हम कोको बुदू का एक मैप देख लेते हैं बेसिकली कि हाउ दिस प्रॉपर्टी इज, कितनी बड़ी है, क्या है यहाँ पे, क्या नहीं है, एंड व्हाट काइंड ऑफ रूम्स आर ऑलरेडी इन देयर। राइट। सो टिपिकली अगर आप देखेंगे तो कोको बुदू हैज थ्री फोर डिफरेंट काइंड ऑफ रूम कैटेगरी। राइट। One is island villa. Island villa is basically their beach villas. Kokobudu beach villas are known as island villa by name, right? And they have the maximum number of rooms by island villas, which is approximately 41 rooms. No, that's how the Kokobudu villas are, right? So ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सारे इनके आइलैंड विला हैं। These are all their island villas, Kokobudu, right? Kokobudu island villas. Then second comes up their water villa. This is their water villa. Then post that there is escape water villa. And then in the end they have Coco residence. Right. Coco residence is kind of a big family room where 2-3 family can live very easily. Right. Now if we go by this, so they have very different thing available in the restaurant. Right. So for example, they have a fitness over water fitness over water fitness center and Coco Spa, which you can see over there, plus a dedicated yoga pavilion also where they have fitness center. Right. So you can see out here. Right. Then there is Spa Beach, which you will see over there. Then there is Dive Center over here. And in Kokobudu, one very unique thing, the person who does scuba diving, which is he's always there. There is one very unique thing about him. I will also tell you later on. So they have multiple sports activity available over here, which people can do. They have all the dining center, multiple dining, food, alcoholic center over there, which you can see. Plus, they have very good this marine life. They have very good marine life if you want to see. So why the marine life is there famous? Good snorkeling points. So they have already in their this they have already defined which are the places which are good for snorkeling, right? So here you will be finding much more about snorkeling than any other place. That's why they have defined what are the areas which are very good for snorkeling. So area which is near Coco Spa, area which is near residence, Coco residence, and area near Water Villa are having the best in terms of snorkeling area. Right. So this is quite a brief. So your customer will arrive over here. Most of the time, your customer will arrive here and then they will walk into here. Then this is their Mediterranean reception area where your customer will get received based on whatever the occupancy your customer will have chosen. In case island villa, they will be transferred here. In case beach villa, they will be water villa, they will be transferred here. In case of this over water villa, right? So they will be transferred over here, escape water villa, right? So let's go much more into deep about these kind of rooms, right? Uh, so basically, if you see, Coco has four different kind of room category, right? But if you see comparative to other resorts rooms, Coco rooms is by far one of the biggest rooms that you will find in Maldives, right? Even island villa size is approximately 188 square meters, right? They have 44 rooms only, right?
So that is kind of size of 2 rooms into 1 room, right? Second, which is very unique in all the room category in Coco is सारे रूम कैटेगरीज में प्राइवेट पूल है। ऐसा नहीं है कि केवल स्केप वाटर विला और कोको रेजिडेंस में प्राइवेट पूल है, नहीं। आइलैंड विला में भी प्राइवेट वाटर पूल है, वाटर विला में भी प्राइवेट पूल है, स्केप वाटर विला में भी प्राइवेट पूल है और कोको रेजिडेंस में भी प्राइवेट पूल है। सो ऑल द 4 रूम कैटेगरी हैज देयर ओन प्राइवेट वाटर विला, वाटर पूल, वाटर, राइट। तो दिस मेक्स देम वेरी यूनिक, राइट, क्योंकि बहुत कम प्रॉपर्टी मॉलडीज में ऐसी है जहां पे सारी रूम कैटेगरीज में, राइट, प्राइवेट पूल है, राइट। एंड स्पेसिफिकली not open private pool. They have closed private pool, right? Which is very private for Indian customer, right? But Indian mostly prefer privacy in that sort of area, right? So you will get a private pool in Island Villa also, right? So that makes it very unique for Indians, right? So if you see the sizes are quite huge. So Island Villa ka size is equivalent to what is the Coco Residence Water Villa size. So that way you will find their Island Villa is also quite huge. So these are the basic amenities that I have already written out here. So add all the basic amenities that you will find anywhere else you will find in the Coco residence. So this is there a small pictorial view of island life, island villa. Obviously, I will walk you through how the things are exactly. So outside sitting area, you will find this. You will find it out this sitting area, this basic bath area, and then you will find bedroom over there, and just behind that bedroom bed you will find your private pool. तो ये आपका बेड है, इसके जस्ट सामने ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा प्राइवेट पूल. So this is as simple as that, their island villa. Then if you see water villa, so this is how a water villa of Coco looks like. So here you will find your private pool, and this is their how the bathroom plus their private pool looks like. Then this is the room, how the rooms look like from inside, and this is the outer look कि आपके कस्टमर को यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस होता है मरीन लाइफ का, फ्रॉम वेयर योर कस्टमर कैन private pool, and this is your sitting area where your customer can sit. This is escape water villa, little bit longer in the room size, everything, your customer can sit it out here. इनको यहाँ से डायरेक्टली दिख रही होती हैं चीजें बाहर की, फ्रॉम देयर हियर इज द एवरीथिंग, देयर इज द प्राइवेट पूल, और फिर यहाँ से जस्ट प्राइवेट पूल के पास ही नीचे मरीन पे जाने का ऑप्शन होता है जो वो जा सकते हैं. Restaurants and bar, what are the restaurants and bar and activity and excursion that this Coco property has? So basically, there are multiple things that Coco has in terms of fooding. So you will find lot of bars and lot of fooding option also in terms of Coco. So Air is their primary all-day dining restaurant, offers stunning view. So this is all-day Air fruit मीनू, जहाँ पे आप जाके अपना बेस्ट ऑल डे आप कभी भी ट्राई कर सकते हो. तो दे हैव केप्ट देयर रेस्टोरेंट नेम डिफरेंटली, which by which name you can see. Then there is Aqua. As the name suggests, Aqua is a local over water villa and elegant and espresso. Then there is Star Restaurant and Bar, which you will find all the best bars menu out there. Latitude Cocktail Bar located in the Infinity Pool. So that's why Latitude is located in Infinity Pool, so you can enjoy the Infinity Pool also. Wine Loft, obviously people who enjoy wine, people who love wine, they have dedicated section, dedicated area for wine people. Set on the beach, barbecue dinner, favorite, you will find if you want a barbecue kind of experience over there, you will find that also. In winter dining option is available also if you want that. One very unique thing that Coco offers to all their honeymoon customers that I will explain to you in the end. Uh, so about it. Then there is activity and excursion. What are the activity and excursion available? That all the famous water sports activity and that thing is available. Here I want to tell you that the person out here in Coco, his name is I think Shafiq, right? He is a very well trained scuba diver, and he has he also do scuba diving. He also does or you can say he gives the scuba diving lessons to Tom Cruise. So Tom Cruise, whenever he's there,
he do scuba diving, he is done with him, right? So that kind of expertise that this resort has. So whenever you might go in Coco and you want to scuba diving, you might have a chance with a person who has already done scuba diving with Tom Cruise, right? So that is kind of expertise this resort have, right? So this is like basic thing. Again, I have VR with me. Again, like last time also we did an visual things of Coco. So I will walk you through that. So that will be much more easy. Before I start that, I just wanted to ask Rakshit. Rakshit, is there any questions? कोई question है लोगों को जो हम लेना चाहते हैं? वेल करंटली एक क्वेश्चन आया है एंड इसके अलावा जो हमारा ट्रिविया क्वेश्चन था कि तापसी पन्नू कहाँ रुकी थी, हाँ हमारे एक एजेंट मेंबर ने उनका आंसर भी दे चुका है. हाँ बताइए. सो आंसर विनीत सर ने दिया था, तापसी स्टेड एट ताज मॉलडीव्स. Which Taj? There are two different Taj. So trivia question is still not answered. There are two different kind of Taj property. सो विनीत सर, आप अपना आंसर कंप्लीट करके जरूर चैट में बताइएगा एंड हम एक्साइटेड हैं कि आपने ताज मॉलडीव्स बताया एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप पूरा नेम भी बता देंगे. सो नेक्स्ट को जो एक क्वेश्चन आया था वो ट्रैवल बट का आया था. वो जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी इन द रूम कैटेगरीज. Okay, so sir, maximum room occupancy typically 2+1, right? In a villa, this is basically island villa, right? Which is basically beach villa, right? As you can see over here. For Coco residency, you will find a larger occupancy over there. I'm not exactly remembering it, but that we will confirm to you later on that how many people can stay in this Coco residency. Coco residency is basically more of a family thing. There are 2-3 rooms out there, so one big family can stay here, and rest of the places either triple sharing 2+1 or everything is allowed. And it is children are happily allowed in this property. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन. एंड विनीत सर ने बहुत जल्दी आंसर भी दे दिया है, ताज एक्सोटिका. एंड अब्दुल सर जो ब्रिलियंस माइस से हैं, उन्होंने भी बता दिया ताज एक्सोटिका. Correct. Taj Exotica is the place where Tapsi stayed, and this is like one of the very famous. And when the lockdown and Tapsi was the one of the few celebrity which she went to Maldives, which started all this Bollywood celebrity going into Maldives, which was very exciting time for at least for travel agent because now people want to travel to Maldives, right? सो Uh, एज ऑलवेज ट्रेंड सेटर कह सकते हैं. Correct. Rakshit, आप तब तक अपने ट्रिविया का आंसर जरूर ढूंढिएगा. Which has a celebrity which has gone into Coco, right? Obviously, all the travel partners also has a full chance here to get into this trivia question. Which are the celebrity that has already stayed in Coco? Obviously, अब मैं तो एंड में ही मैं तो एंड में ही बताऊंगा या फिर अगर कोई गया होगा तो. Till that time, let's move ahead with the this aerial view. So basically, डेफिनेटली. if you see, this is an aerial view of Coco Residency. Sorry. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप फुल व्यू देख सकते हैं कोको का इजीली. हाउ द कोको लुक लाइक. So this is the Coco जो मैंने आपको बताया था. This Coco Residency. This is Coco Residency. Obviously Coco Residency के बारे में हम इन डिटेल में भी देखेंगे. Then this is यहाँ पे कोको की स्पा प्लस इनका ओवर वाटर विला सेंटर. सॉरी. This is their beach villa, island villa, which you want to say, right? And there they have two different kind of room category. One is water villa, this, and then they have second kind of water villa, that is Cape Water Villa. And here it is in their restaurants, and here it is in beach villa. तो सबसे पहले मेन एरिया में चलते हैं. Let's get into first main area to see what are the main areas of Coco, so that it gives you a pretty much clear idea. As your customer keep on asking you about Coco, correct? So Coco को सबसे पहले अपने customer को काफी अच्छी तरह समझाने की जरूरत होती है, because customer might have different questions, right? So let's go with Island Villa first to understand about Island Villa.
तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि आइलैंड विला का रूम काफी बड़ा होता है, तो यू योरसेल्फ कैन सी हाउ द बिग रूम इज, क्योंकि यहाँ पे सीटिंग एरिया है, फिर उसके बाद आप वॉक करके यहाँ जाते हो, यहाँ पे ये एरिया है, फिर इसके बाद आपका बेड स्टार्ट होता है। तो बाय द साइज itself you can imagine how the big room is, right? And here you will find your outside sitting area. यहाँ पे आप आराम से बाहर बैठ सकते हैं, यहाँ पे आपके बाहर सिटिंग एरिया है, यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे रिलैक्सेशन के लिए ये है, करेक्ट? एंड यू कैन सी a great size of room, giant size of room in Island Villa, right? Let's obviously taking little bit time to load. Let me just refresh, check my internet if my internet is slow or what. Mm. वेल, ट्रिविया क्वेश्चंस के आंसर पोर इन होने भी स्टार्ट हो चुके हैं। हमारे एक मेंबर ने आंसर थोड़ा बताया भी है, जिनमें बेरोड सर ने, मर्सिया बैरेट फ्रॉम द फेमस बोनी एम स्टेड एट कोको बोदू हिथी। Great. आई थिंक रक्षित, देखिए आपसे ज़्यादा लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कोको के बारे में रिसर्च कर लिया, बिकॉज पीपल आर आंसरिंग इट मच फास्टर, राइट? लेट्स होप आप भी इसके और ज़्यादा आंसर कर पाए। अगेन सॉरी, माय इंटरनेट इज बैकअप। सो सी, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको यहाँ से फ्रंट व्यू रूम दिखाया था, करेक्ट? अब इस रूम को आप डिटेल में देखते जाएंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी इस रूम के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें दिखती जाएंगी, राइट? यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे देखिए पूल, द private pool of your, see, this is the private pool that I talked about in Island Villa itself. So you have your private pool, here you have sitting area, here also you have sitting area, and here you can find your bed, right? Correct. And see the room size. वापस से आप इस रूम साइज को देखेंगे तो यहाँ पे आप जाके देखेंगे कि आपका रूम साइज कितना ही बड़ा है, राइट? And this room itself has a quite a big room size. So you have your washing area over here, everything over here, and very different kind of experience. You have sitting over area over here, right? You can watch television sitting area, and it is designed in a quite a modern way, right? So all these might have very different kind of rooms, but you will find a very modernized room designed by Coco Properties, a very luxury way. So even if two or two plus one people, three people are staying in the room, it is not a problem because room size is such a big, right? तो रूम साइज की कभी प्रॉब्लम आज तक कोको में किसी को नहीं आई, राइट? ऑब्वियसली आइलैंड विला के बाद लेट्स गो इनटू second room category, which is water villa, right? So this is like outside area sitting room where you have private pool, right? And this is their outside area जहाँ से आप सारी चीजें देख सकते हो. Let's go into bedroom. Like you can see, this is the bed, right? Bedroom area, this is the bed, and you will find yourself just seeing this whenever you rise up, and you have your private pool over here, and see how good privacy is maintained over here. इट इज कम्प्लीटली प्राइवेट, यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं, यहाँ पे प्राइवेट पूल यूज कर सकते हैं, यहाँ से आप नीचे अपनी मरीन लाइफ का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, राइट? यू वांट टू सी बाथरूम, दिस इज द बाथरूम, this is the bathroom area of your this residency, and it is also a bathtub. Like this all the rooms has a bathtub, right? That is not an issue, correct? And you can very easily find your open shower area over here, right? Your open shower area very easily over here, and you can find your private pool over there, right? And then you let's go check into about escape water villa. Escape water villa has two unique things. First, it has a bigger room size, right? So like they have dedicated differently. They have TV sitting area over here, living room. Then they have different bedroom over here. And the unique thing that you will find in bedroom is bedroom size is a little bit bigger. So you front view is this, and then this view. You come out here, and then you have your private pool, and then you can go over there. And you have separate bathroom over there,
and you have over here your separate area of sitting area, right? So this is a very different kind of room category over there. As people have asked me about Coco Residency, if you go by Coco Residency, you will find this is a more of an family kind of room where you will find living or Coco Residency, bedroom, private pool just around here, and you will see dedicated sitting over there, room connected, and then you will see deck. See the deck. Right. And obviously, if you want dining, right, then you will find rest first go into Air Restaurant. So basically, Air Restaurant has a very good uh, all-time open like breakfast, lunch, and dinner kind of thing. So let's first get into Air Restaurant so that we can see that uh, about restaurants in Coco. So Coco has one few things which is very good. You will find lot of Indian staff in Coco. So at any point of time आपके customer को कभी ये problem नहीं आएगी कि they are not able to talk to anyone, they are not able to explain to anyone, right? Even restaurant you will find lot of Indian people who are in their restaurant. So जब भी आप के customer कुछ breakfast, lunch या dinner के लिए जा रहे हो, if they are able to talk to them, they might able to get some good Indian food also over there, right? So they have Indian food available over there, but some they have to your customer have to tell them what is their requirement, what they want, right? So suppose if they go over there and उन्हें वहाँ पे कुछ मिलता नहीं है, so they don't have to think, oh, there is nothing that we are able to find, right? They might able to talk to that chef, Indian chefs over there, because there are a lot of Indian chefs. There are few people, few staff also Indian, so they should able to talk to. उनको उनसे बात करनी चाहिए कि this is their exact requirement, how to get that, right? Then those people will be able to help them in accurate manner in exactly the way they want, right? Second thing in Coco which is very good is Coco के uh, marine life काफी अच्छी है. So there you will find giant turtles, right? So if your customer is doing snorkeling, so they will be able to find giant turtles which they will not be able to find anywhere else, right? Obviously once you have 5 or 6 different kind of restaurant, then you will be able to find lot of options in terms of fooding, in terms of cuisine, in terms of drinks if they want to do, right? So that is something which they will be able to find, right? कोको स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ मील प्लान में जो आता है वो हाफ बोर्ड के साथ आता है, राइट? इन टर्म्स ऑफ इंडियन मार्केट, बट योर कस्टमर कैन ऑलवेज अपग्रेड इट टू फुल बोर्ड in the all inclusive plan also, right? So that they can always do anyhow, right? So that is something available. Well, few thing which is very good in Coco is which Coco offers is एक floating breakfast आपको हमेशा free मिलता है, right? So even if you are staying 3 night island villa, right, you will get one floating breakfast free. So your customer will be always happy because they will be able to click photograph for their Instagram, click photograph for their other pages, right? So they will be able to get all the details over here about Instagram and everything, right? So that is something which they will be able to do, Instagram and other stuff, right? So that is how the this Coco की details के बारे में ये है, right? Obviously, there are certain things that Coco Resort also have जो कि हम आपको यहाँ पे बता देते हैं. जैसे कि हमने बताया हमने ये कोको का एक डेडिकेटेड पेज बनाया हुआ है maldives.traftland.com/coco. यहाँ पे आप कोको की और इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं जैसे कि एवरी रूम विद अ प्राइवेट पूल, वन फ्री फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट, वन चाइल्ड फ्री विद ओनली ग्रीटिंग टैक्स चार्जेबल, राइट? एंड स्टार्टिंग प्राइस क्या है कोको की, राइट? दिस इज वन वेरी कॉमन थिंग आस्क्ड, राइट? गिवन दैट 3 नाइट अगर आप आइलैंड विला लेते हो फुल बोर्ड मीन के प्लान, सी स्पीड बोट ट्रांसफर, वन फ्री फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट, one child free, choice of one windsurfing and karaoke riding. This you will get in $19-20 per couple, right? इसमें आपका ट्रांसफर्स, फुल बोर्ड मील प्लान और ये सारी चीजें इंक्लूडेड होगी. One very interesting thing that Coco also offer to their honeymoon customer is like 30 to 45 minutes they assign you one person from their staff जो आपकी हेल्प करता है फोटोग्राफ्स क्लिक करने में, right? One time, right? Just to ensure कि the memories that you want to capture get captured in Maldives.
So that is on also one thing which Coco offers, right? तो आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रूम कैटेगरी के प्लान के ऑप्शन देख सकते हैं कोको में, जो भी अवेलेबल है. Coco is an 5-star property starting at 1920 USD per couple in full board meal plan. Obviously, अगर आपका कस्टमर हाफ बोर्ड meal plan ले रहा होगा तो obviously the pricing will be lower, but that is something obviously your customer choice is there. Uh, Rakshit, let's see what are the questions that people have in their mind. Definitely. So, first question is from Karan Srivastav, Hmm. and they're basically like, this is question from most of our members, and they want to ask like, what is the marriage proof that is need to be given for honeymoon booking? Like wedding card will work or anything else is required? Basically, if you see the Maldives के जितने भी रिजॉर्ट होते हैं वो बेसिकली आपसे मैरिज सर्टिफिकेट मांगते हैं, राइट? बट इफ यू आर मैरिड वेरी रिसेंटली लाइक विद इन अ वीक, राइट, जैसा कि इंडिया में ट्रेंड है कि आपकी शादी हुई, marriage registration take lot more time than obviously getting married, right? And you immediately travel. That in that case, they also accept the marriage cards, right? But if you see their requirement, they always ask marriage certificate, and that should be required within 6 months. It depends. 6 to 12 months is depending upon the resort to resort. Coco typically asks for 6 months. All right. So definitely काफी important piece of information है कि रिजॉर्ट टू रिजॉर्ट चीज मेंशन लाइक ये डिफर कर रही होती है, जैसा कि आपने टाइम ड्यूरेशन बताई कि कोको में 6 months है एंड इट कैन रेंज अप टू 12 months एज वेल इन सम रिजॉर्ट्स. सो मैरिज सर्टिफिकेट विल बी मोर और लेस लाइक विल बी लाइक काफी रहेगा डेफिनेटली, है ना सैफी सर? करेक्ट. तो कस्टमर्स को आइदर मैरिज सर्टिफिकेट और अपना कार्ड लेके जाना चाहिए, मैरिज कार्ड, सो दैट सॉरी दिस वेडिंग कार्ड, so that they can show it for their honeymoon thing. Second thing, which travel agent has to pay very much attention is, at the time of booking you have to mention it is an honeymoon trip, it is an anniversary trip, or any other kind of trip. If you have not mentioned at the time of booking that it is an honeymoon trip, right? Then it becomes very difficult to arrange any honeymoon inclusion for your customer, even if when they arrive and they show proper document also, because at the time of reservation it is not mentioned, right? So your customer will might, अगर पहले दिन उनको जो honeymoon inclusion मिलने थे वो शायद से फिर पहले दिन नहीं मिलेंगे, वो सेकंड थर्ड डे मिलेंगे, राइट? सो टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ, ये कॉमन चीज होती है जो अपने कस्टमर्स के लिए अवॉइड करनी चाहिए ट्रैवल एजेंट को. एट द टाइम ऑफ बुकिंग इटसेल्फ यू शुड मेंशन what kind of trip it is, honeymoon, anniversary, or any other, if you want to avail any benefit, whatever running offer that is going on for any anniversary or honeymooners. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ट्रैवल वर्ड का है एंड दे वांट टू आस्क लाइक सारी रूम कैटेगरीज में प्राइवेट पूल है? करेक्ट सर, ये आपने एकदम सही सुना है, एंड दिस इज व्हाई वी हैव डन दिस सेशन स्पेशली बिकॉज काफी ज्यादा इंडिया मार्केट में अभी डिमांड है दो चीजों की, प्राइवेट पूल रूम की, और सेकंड फ्री फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट की. ये दोनों चीजें आपको इस प्रॉपर्टी में मिल रही है. वन फ्री फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट इज फ्री. अगर आप एक से ज्यादा चाहते हैं तो ऑब्वियसली दैट विल बी चार्जेबल. एंड वन फ्री फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट इटसेल्फ कॉस्ट यू अराउंड, अगर आप दूसरी प्रॉपर्टी में पूछेंगे, अराउंड 90 to 100 USD per person टाइप्स, राइट? दैट इज समथिंग विच यू कैन टेल योर ट्रैवल एजेंट अपने कस्टमर को कि हाउ मच एडवांटेज दे आर गेटिंग इन दिस थिंग. डेफिनेटली एंड इंडीड जो प्राइवेट पूल का एक अपना एक्सपीरियंस है वो काफ़ी यूनिक होता है एंड जैसा कि मैंने इनिशियल पार्ट में भी बताया था कि रिसेंट टाइम्स में खासकर पोस्ट कोविड टाइम्स में वी इंडियंस आर मूविंग टुवर्ड्स दैट थिंग कि प्राइवेसी होनी चाहिए डेफिनेटली. सो डेफिनेटली आपके इंडियन जो आपके कस्टमर्स हैं वो भी चाहेंगे कि अगर हर एक रूम में प्राइवेट पूल अगर उनको मिलता है तो डेफिनेटली दे विल बी मोर देन हैप्पी. करेक्ट. इवन रक्षित, आप इनके बीच विला का भी पूल देखोगे ना, so that is not outside of the room, like some properties has outside of the room pool, private pool, right? That is in the backyard of the room, right? So that makes it really private for Indian customer. वेल डेफिनेटली कोको वूडू ने काफी कॉन्शियसली डिजाइन करा इस चीज को कि वो प्राइवेट पूल एक्चुअली प्राइवेट रहे. Correct. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो गौरव चैटर्जी का है एंड दे बेसिकली वांट टू आस्क लाइक व्हाट इज द बेस्ट टाइम और सीजन टू ट्रैवल? So Maldives is all round year destination. Basically, reason being, basically Maldives is an island destination, right?
and if you see their pricing, so they have different pricing: high season, shoulder season, and low season, right? So their low season will be when there is rains are going on. Why? Because then at that point of time it become unpredictable कि बारिश कब होगी, right? So you might not be enjoy that much while sitting at beach, right? That's why at least European go over there to sit in the sun in the beach and enjoy that beach, right? But for Indian, it might be better advantage because in summers, if you say May, June, July, uh, it is again wedding season in India. So a lot of honeymooner go at that point of time. They get two, three advantages. One, it gives them better deals because at least from Jan Feb के जब आप rate compare करोगे May June के, so they will be down by 20-30%. So that is then one advantage that your customer has. Second, the humidity is not much in Maldives, right? Humidity उतनी problem नहीं होती. People who at least live northern part and southern part of India, right? Because we are used to that kind of weather. 45 temperature नहीं होता जैसे दिल्ली में होता है, right? So that kind of thing. And people who live in Bombay, they are used to rain at that point of time. And South India में वो एक चीज होती है. So we are very well accustomed to these kind of things. So that's why like in Europe जैसे prefer करते हैं कि summers में जाइए because you can enjoy it, right? So ऐसा कुछ Maldives में नहीं है, right? All the year round destination है. आप कभी भी जा सकते हैं आपका customer and they will enjoy Maldives for sure. All right, I hope this gives them an idea about their question. Next question जो है वो सरिता सिंघानिया मैम का है, and they basically want to ask कि speedboat transfers जो है वो hotels की तरफ से होते हैं या फिर we have to book for the clients? No मैम, you don't have to book for the client. जो भी आप पैकेज होता है उसमें speedboat transfer included होता है, right? So let's break this problem in two parts. One, अगर आपका कस्टमर booking.com पे जाता है बुकिंग करने, right? और वहां से बुक करता है, right? Then he has to book his speedboat separately and he has to pay for it also at arrival in Maldives, right? Directly to resort, right? क्योंकि booking.com केवल उनकी होटल बुकिंग करता है, ट्रांसफर की नहीं. ट्रांसफर की बोलता है कि आप डायरेक्टली अपने कस्टमर को पे करें. But if travel agent is doing their booking, if you give us a lead of as a DMC for Coco Bodu lead, हम आपको जो पैकेज देंगे उसमें रिटर्न एयरपोर्ट ट्रांसफर्स, मील्स, ये सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी. जस्ट जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, मैं एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ हमारा कोको बुदू का पेज. एंड once Rakshit is sharing the PPT, I will ask Rakshit to attach this link also, so people can have this link. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे already included है full board meal plan, speedboat transfer. This is return speedboat transfer is already included in this package. You don't have to pay 19 extra about from 1920. All right, thank you so much Safi for answering this question. Next question जो है वो तनुश्री मैम का है, and this is I believe in basically regards with जो नई international arrivals के लिए policy आई है. So the question is in regards with what about the RT-PCR test and how much will it cost in Maldives? So basically, most of the 4-5 star property or 3-star property, all the property have their RT-PCR test available in the property itself. आप वहाँ पे करवा सकते हैं. Every resort have different RT. इसकी प्राइसिंग जो है रिजॉर्ट टू रिजॉर्ट डिपेंड करती है, राइट? मैं आपको एक रेंज बता सकता हूँ, राइट? ऑब्वियसली जब आप बुकिंग कर रहे होंगे उस टाइम पे ही आपको एग्जैक्ट प्राइसिंग किसी भी प्रॉपर्टी का पता चल पाएगा. रेंज लाइज बिटवीन 150 USD, 120 USD टू 200 USD. ये एक रेंज होती है पर पर्सन जिसके बीच में टेस्टिंग का प्राइस होता है. अब काफी सारे लोगों को क्वेश्चन होगा कि व्हाई द प्राइस इज सो हाई, राइट? Again, understand Maldives in every resort is based in a small island, right? वहां से अगर आपका टेस्ट भी होगा तो रिजल्ट वहां नहीं आएगा. रिजल्ट लाने के लिए भी उनको उस टेस्ट सैंपल को स्पीड बोट से ले जाना पड़ेगा माली सिटी, राइट? ट्रांसफर्स टू फ्रो, राइट? So that's why it is a little bit costly test over there, between 120 to 200 USD. But वो depend करता है totally resort to resort पे how the things are, right? And because recently this Indian government has introduced this law, right? Earlier था नहीं, तो इसलिए सारे resort की pricing exactly clear नहीं थी क्योंकि सारे लोग करा नहीं रहे थे, right? Now I think going forward more and more as things happen because it is implemented from today itself, right? So we are very much sure that within few days we will get much more clear picture regarding each and every property pricing, and obviously we'll keep you updated about this as we get more clarity on this.
Definitely, Safi sir, and I hope this gives them an idea about their question as well. Next question जो है, so सैफी सर आप प्लीज थोड़ा सा अगर कोको बूदू के स्प्लिट स्टे उसके बारे में बता पाए, अवेलेबिलिटी के बारे में, बिकॉज वी हैव रिसीव्ड अ कपल ऑफ क्वेश्चंस इन दिस रिगार्ड्स, लाइक ट्रैवल बर्ड का क्वेश्चन है कि is split stay available like 2 nights in Coco Budu and 2 nights in any other resort? In any other resort, not in Kokobudu, but any other resort. Uh, Yes, see, again same thing है. For example, जैसे अभी हमने discuss करा, Maldivian government have their own different policy, right? So if your customer is staying for 2 night in some resort and 2 night in another resort, two things happen. Yes, it is possible. ऐसा impossible नहीं है. ओनली टू, इससे दो चीजें होती है. पहला योर प्राइसिंग इंक्रीजेस. क्यों? आपको वापस स्पीड बोट से आना पड़ता है माली सिटी, फिर आपको वापस जाना पड़ता है. सेकेंड, देयर माइट बी Maldivian government rule that in the split stay case you have to go through a COVID test in Maldives, right? So you might have to go a different COVID test before leaving. Indian government वाला COVID test split stay लेते हो तो if there is Maldivian government rule, आपको वो COVID test लेना पड़ेगा. That is has to be checked. Otherwise it is possible. It's just that your costing increases क्योंकि आपका speed return speed boat का transfer तो लगेगा ही, प्लस नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो भी आप ले रहे हो उसका भी रिटर्न स्पीड बोट ट्रांसफर का कॉस्ट लगेगा ही लगेगा, राइट? So that is possible. It totally depends if Maldivian government allow it at all. If they allow it is possible. It's just that your cost, if your customer doesn't have a budget issue, then it is possible. इंडीड. एंड आई रिमेम्बर कि जो हमारा एक मॉलडीज का सेशन हुआ था रमन सर के साथ, तो तब के टाइम पे मॉलडीज गवर्नमेंट की पॉलिसी तब ये थी कि आइलैंड हॉपिंग तब अलाउड नहीं थी. करंट गाइडलाइंस में भी हो सकता है चेंज हो गई हो, तो वो डेफिनेटली एक बार कंफर्म करना पड़ेगा उस रिगार्ड्स में. करेक्ट. सो एंड थोड़ा सा सेम प्रॉपर्टी के स्प्लिट स्टे के बारे में भी आप बता दीजिए. हाँ, तो Maldives कोकोबुदू में स्प्लिट स्टे इज अलाउड. 2+1, 2+2, 2+3, आप जैसे भी स्प्लिट स्टे लेना चाहते हो, ऑल द स्प्लिट स्टे इज पॉसिबल एंड देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट? आप आराम से कर सकते हो. इवन आप वॉट कोको आइलैंड विला प्लस वाटर विला का ले सकते हो, आइलैंड विला प्लस escape water villa का ले सकते हो. तो multiple options are there, whichever is available you can do. Second advantage that you get in Coco Budo is, see, uh, in Maldives there are two different kind of properties. One which is like has a limited less number of rooms. Second which is quite a big number of rooms, right? Because this property has all the room has private pool, right? So rooms के मामले में आपको options ज़्यादा मिल जाते हैं कि which kind of room that you want to give to your customer, right? So like it is an 100 room category available, right? अगर आप escape और water villa का भी मिलाएंगे तो 32 rooms are there, right? And then there are 44 rooms of island villa, right? So beach villa भी enough है, water villa भी enough है in the two different categories, and they have quite an spacious room. So that's why you will get a much better option to choose from for your customers. All right, I hope this gives them an idea about their question. Next question जो है वो सुकेश जी का है, and वो जानना चाहते हैं कि does the resort have an all inclusion plan also, and in that case what will be the type of liquor that is served, like will it be a local brand or a premium brand? Uh, Very good question. Yes, all inclusive plan is available, right? Uh, Type of liquor is totally depending upon the kind of offer that resort is running at that point of time, right? Some resort give you exclusively tell you. So, for example, Coco has an one different kind of wine shop also, right? So that is not part of all inclusive plan, right? So ऑल इंक्लूसिव प्लान यू हैव, सो मैं एक बार फिर से लोगों को बेसिक ऑल इंक्लूसिव प्लान में बता देता हूँ क्या क्या इंक्लूड होता है. In all inclusive plan, they subscribe you kind of non-alcoholic drink that you can have, kind of alcoholic drink you have, and kind of brands you can have, right? तो ये तीन चीजों फिक्स कर देते हैं, right? तो बहुत ही कम रिजॉर्ट होते हैं जो आपको सारे सिलेक्शन का ऑप्शन दे देते हैं कि आप कोई भी ले सकते हो. अदरवाइज दे फिक्स योर सिलेक्शन, राइट? कि आप कौन कौन सी सेलेक्टेड बियर्स ले सकते हो, कौन कौन सी सेलेक्टेड लिकर ले सकते हो, कौन कौन सी सेलेक्टेड जूसेस या फिर नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक ले सकते हो, जस्ट टू गिव यू एन अनलिमिटेड एक्सपीरियंस कि आप इसको अनलिमिटेड ले सकते हैं, राइट? बट दैट डजंट मीन कि आप अनलिमिटेड कोई भी ब्रांड ले सकते हैं. That is simply something which Maldives resorts don't do right now. Obviously there are certain property which do it, but there are 5-star ultra luxury property they do it.
Just before take next question, Akshat, I would just want to tell travel partners, यहाँ पे इसीलिए हमने check availability का भी option बना रखा है, where before talking to your customer, while talking to your customer, you can check this live availability chart कि कौन कौन सा रूम कब अवेलेबल है. For example, if you see water villa with pool is sold out till 16 March. Now you can see how big demand it is of water villa with pool, right? Escape villa with pool is also getting sold out. Beach villa is already sold out till 9th, right? 10th 11th 12th is available. If any your customer you want, जैसे अब होली वाला weekend है, right? या फिर गुड फ्राइडे वाला वीकेंड है, यू कैन सी इन गुड फ्राइडे वीकेंड ऑलरेडी ईस्टर टाइम स्केप विला वाटर विला विद पुल इज सोल्ड आउट. This is all Easter and Holi wala weekend, and you can see this water villa with pool is also getting sold out, right? So this way you can check beforehand while talking to your customer, while suggesting something, what kind of room category and everything is available, right? And even if somebody is telling them कि हम आपको दिला देंगे, you can tell them we have seen the availability chart. It will be very difficult for you to get that room. So this is something which we are actively updating for our travel partners so that they can get help and they can get right information about the room availability, क्योंकि ultimately वो अपने customer को right information देता है. डेफिनेटली एंड इंडीड कि अगर हमारे ट्रैवल मेंबर्स के पास भी अपडेटेड चार्ट होता है तो हम उसमें भी उनको रिवॉर्ड बेसिकली दे रहे होते हैं, तो सैफी सर आप उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए. हाँ श्योर, थैंक्स रक्षित, आपने मुझे ये तो यहाँ पे अगर आप सॉरी so see there are a lot of properties which are listed out there, but not might not be every property has their availability chart, correct? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बियादू आइलैंड की अवेलेबिलिटी चार्ट नहीं है, right? So if any travel agent upload the inventory chart, they get USD off, 10 USD off in their next booking, right? It does two things. One, it helps all the community if you upload the right and latest. Please only upload the availability chart if you have 3-4 day old availability chart. 10 दिन पुराना है तो please upload मत करिएगा, because that doesn't serve any purpose for any travel partner, right? And this is for only to help travel partners. तो यहाँ से आप upload कर सकते हैं, and once you will upload, right, you can see you have to upload, you have to enter these details, and you will get the $10 off in your next booking. All right. Thank you so much, Safi sir, for telling this important piece of information as well. Next question जो है वो धीरेन स्काईलैंड हॉलीडे स्काई, एंड वो जानना चाहते हैं कि आर देयर एनी टूर्स लाइक डॉल्फिन वॉचिंग टूर ऑन ऑल इंक्लूसिव पैकेज. uh, so they give you like we have already mentioned over here. So they give you two kind of option right now. Sorry, here a choice of one windsurfing and canopy riding. They give you in water sports activity, right? Apart from that, if you see any other water sports activity, then uh, it is chargeable at the resort, and every option might have different charges for it, and for that let me see if there is any other that we will definitely let you know, but you can find it over here, and rest of the water sports activity are chargeable. ओके, सो आई होप दिस गिव्स देम एन आइडिया अबाउट देयर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो संतोष जी का है, एंड वो बेसिकली जानना चाहते हैं कि फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट के बारे में, लाइक थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकें या अगर फोटो वाइज आप दिखा सके कि कितना इंटरेस्टिंग होता है फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट जो होता है कोको बुदू हिती में, तो उसकी अगर एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल हो सके तो. Yes sir, ये बिल्कुल possible हो सकता है. So let me show you this, and I think this is best used in Instagram. So I think we should use Instagram for this. Let me just so like you can see this. This is one example of floating breakfast. You get all your breakfast in this pool of water, and you can enjoy your floating breakfast. This is kind of pictorial view of the Insta your this floating breakfast. As you can see in Instagram of Coco Bodu, you will be able to find much more detailed information about different room category, and different this this is like island villa like I showed you.
डिफरेंट रूम कैटेगरी एंड डिटेल्स आउट देयर। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मोर इन्फॉर्मेशन की यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, कैसे होती हैं। So you can guide your customer accordingly, and you can share them also, so they can also watch, and it helps them to decide about what kind of activity they want to choose. डेफिनेटली एक पिक्चर से हमारे डेफिनेटली ट्रैवल एजेंट्स को इंडीड हेल्प हुई होगी कि एक फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट का क्या एक्सपीरियंस होता है। लाइक एक वर्ड्स में बोलना एंड उसको एक पिक्चराइजेशन करने में डेफिनेटली डिफरेंस होता है। एंड पिक्चर्स देख के इंडीड मुझे तो काफ़ी एक्साइटेड ये लगता है कि जैसा मैंने इनिशियल पार्ट में भी बताया था, लाइक मैंने पहले भी पिक्चर्स देख रखी है फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट की, एंड वो एक काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस होता है। एंड डेफिनेटली जो हमारे आपके जो कस्टमर्स होंगे वो भी डेफिनेटली लव करेंगे इस एक्सपीरियंस को। सो Correct. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ट्रैवल पिंगू का है, एंड वो जानना चाहते हैं कि कैन द कस्टमर्स ईट एनी अदर रेस्टोरेंट इफ दे स्टे इन कोको बुदू एंड चूज फुल बोर्ड लाइक एयर, एक्वा, स्टार्स, ब्रीज और सुकी? No, if you go by any Maldives resort, so once you book any full board or all-inclusive plan, they fix the kind of restaurant that you will be having your breakfast, lunch, and dinner, right? Apart from that, if you want to have any other place that you want to eat, that is chargeable, right? And depending upon the kind of room that you are staying in, right? So, for example, they fix different kind of room categories, different kind of options that they can provide. If you want to add in the some different kind of restaurant that is not fixed for your property, then you have to pay for it. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो धीरेन्द्र स्काई एंड हॉलीडेज का है, एंड वो जानना चाहते हैं कि डू कोको बुदू हैज एनी लाइव परफॉर्मेंसेस और शोज इन द नाइट? Yes, there sometimes music get played around their bar area, right, which is their main bar, right. Their musics and those kind of DJ is there that gets played on in every Maldivian property, right. Mostly English songs is played. Sometimes they might have Bollywood night or Bollywood music, but that is totally something which depend upon resort and their choice and the kind of musician at that point of time that is available over there. All right. I hope this gives them an idea about their question. So, last question before we wrap up our today's session. I know ये हम initial part में discuss कर चुके हैं, but एक बार फिर भी travel members जो हैं हमारे उनके लिए कि are seaplane transfers available for Coco Budu Hithi? No, sir. Sorry, there is no seaplane option available for Coco Budu. Only speedboat transfer is available for Coco Budu, and people can travel to resort within 35 to 40 minutes from airport uh, in speedboat. All right. So on that note, thank you so much, Safi, for another हमारा learning session के लिए, and I hope कि हमारे travel members जिन्होंने अपना precious time निकाल के session attend करा, and जो हमारा ये initiative है हमारा Maldives training workshop का, I hope उनसे उनके doubts clear होते रहेंगे, and हम आगे भी definitely ये sessions और करते रहेंगे ताकि आप हमारे Maldives expert बन सके। एंड आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप वो ट्रैप क्लान ऐप या वेबसाइट पे सबमिट कराएं, एंड हम आपको बेस्ट B2B कोर्स प्रोवाइड करेंगे। एंड द व्यूअर्स जो हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा एंड हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा सो दैट यू नेवर मिस आउट ऑन एनी सच ऑफ आवर एक्साइटिंग लर्निंग वेबिनार्स। सो थैंक यू वंस अगेन, टिल देन नेक्स्ट टाइम। Thank you. Bye.